Children, till now we have done three properties of triangle. First is angle sum property. Angle sum property of a triangle states that the sum of all angles of the triangle is 180 degrees. Where there is a square on the corner, we know it is a right angle triangle. So when we add these triangles, these measures, this comes equal to 180 degree. We have learned this in the activity also. Second property we have done is for isosceles triangle. So if the sides of isosceles triangle are same, then the angles corresponding to those sides are also same. So DE side is equal to EF side. So this means that how to write it? DE line is equal to EF. It is given. ठीक है. अब हमारी angles जो equal हैं, those angles are angle D and angle F. Okay. This is the main thing you have to write while using the properties in the isosceles triangle. Now for this triangle, in triangle LMN, ठीक है, in this triangle, what is given? Which two sides are equal to each other? So LM is equal to MN. Here LM is equal to MN. So first of all, we have to observe the given figure properly and look at what is given and what is not. What do we have to find out? So here it is given that LM is equal to MN. Now we have to find out the base angles. So base is over here. If these two sides are equal. So the angles which are same are angle L and angle N. ठीक है. अब हमें बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं. What property can we apply? Simply we know angle L is 55 degrees. So the measure of angle N is also 55 degrees. So here we'll write angle N is equal to 55 degrees. The reason behind is we are using here isosceles triangle का. It is an isosceles triangle. Okay, and this is done. बस ये हो गया आपका आंसर. So you need to write down the name of the triangle. You need to write which lines are equal. You need to write which angles are unequal to locate the angles. ध्यान से देखना है. दोनों साइड इक्वल है, उसके बेस पे जो लाइन बनी होगी उसके एंगल्स आपके सेम होंगे. So this is all we have to do in isosceles triangle. बहुत ज़्यादा डिटेल में we will not apply all the properties we have learned. Now for this, अब यहाँ पे isosceles triangle की property obviously we are not going to use. Here we are using, though two measures are given, we have to find out third. So we are using angle P, angle Q, angle R. They all sum up equal to 180 degree. Write down the reason why. Because we are using here angle sum property. Okay, now we can say अगर हम इन दोनों angles को add कर देते हैं, so this will be 70 plus 50. This equals to 120 degrees. So this is angle Q and angle R added up to 120 degrees, but we have to find out the value of angle P, that is 180 degrees. So आपने लिखना है. So angle P is equal to 180 degrees minus 120 degrees. So angle P is equal to 60 degrees. This is the measure of angle required. We always put the answer here. So we need not to think कि अब यहाँ isosceles लगाऊं, अब यहाँ triangle sum property लगाऊं, अब मैं यहाँ पे equilateral triangle लगाऊं. आपको यहाँ पे सोच के करना है कि मुझे बस एक छोटे क्लिक में, एक छोटे शॉट में कितनी जल्दी अपना आंसर एक शॉट है. That is why we do properties, so that we need not to move here and there. Easy हो जाए हमारा काम. Now next is
अब दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव हियर. अब दिस इज एन फर्स्ट, हमें क्या है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल. वाई, पहले ये लिखो क्यों, बिकॉज द लाइन्स हियर, दिस इज एक्स वाई and line xz are equal to each other. They are equal to each other. Okay, अब ये दोनों equal है, so यहाँ पे दिया है आपके पास this line is equal to this line, लिखना है ये, ठीक है. We will write this, that in this triangle xy first thing is equal to xz, ठीक है, it is given. नेक्स्ट, अब कौन से बेस एंगल्स इक्वल होंगे, इन दोनों इक्वल साइड्स के सामने बिल्कुल बेस पे जो बनी, जिस पे ये दोनों लाइंस बनी है, ये वाला और ये वाला, एंगल y एंड एंगल z. A problem is the measure of these angles are not given, so we cannot apply isosceles triangle का property straight away. Firstly we have to think of कैसे करें इसको. अब हमें एक पहली प्रॉपर्टी पता है कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं, और हमें ये भी पता लग गया कि एंगल y जो है वो एंगल z के इक्वल है. तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मेजर है 180 डिग्रीज, उसमें से हम 84 निकाल देंगे. अगर हम यहाँ से 84 डिग्रीज को माइनस कर दें, ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ से इसको डिलीट कर दें, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, we are left with the measure of angle y and angle z. So we will say that angle y plus angle z is equal to, what will be the measure coming over here? So it is 10, it is 7, 10 minus 4 is 6, and this is 17 minus 8 is 9, 96 डिग्री. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों एंगल जो हमारे पास बचे थे, इनका जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 96 डिग्री. बट वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ टू एंगल्स. अब हमारे पास क्या पता था कि दीज टू एंगल्स आर सेम, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, तो इफ दीज आर इक्वल टू ईच अदर, तो वी कैन से, यहाँ पे लिखो, सो अगर हम ऐसा कर दें, we divide 96 into two equal parts, that will give us, or you can write it in some other way also, dividing 96 into two parts. Why? Because angle z is equal to angle y. Write it, सीधा लिखना, मेरे तरह टेढ़ा मत लिख देना. So यहाँ पे this will be 40, this will be what, 48 degrees. ठीक है, when we divide it, this is what we need to do. We need to write the name of triangle, the sides which are equal, the angles which are equal. Then we have to firstly take out that angle which will give us the measure of two angles which we have to find out. Here we got the measure of two angles which we have to find out. Now after that, what we did, we divided it into two parts because the measure of these two angles are same. हमने क्या बोला है कि it is isosceles triangle. ये अगर 48 डिग्री है तो it should be 48 degrees. ये दोनों भी 48 degrees होने चाहिए. That is why, और लिखना है यहाँ ब्रैकेट में कि this is 48 degrees. तो ये हमारे पास किस तरह से आया है, रीजन क्या है इसको करने का.